Good evening, everyone. Thank you so much joining us today on yet another webinar that we're doing, which is very important for us to keep doing these webinars for knowledge sharing. And today we have Sakshi. She is a researcher, air quality researcher at ASER. And today, so we're going to talk about the latest highlights on NCAP and the 15th finance budgets and spends. The National Clean Air Program has completed 5 years since its initiation, with designated central funds and their performance based allocation being one of the key features. So, today, Sakshi will attempt to provide an overview of the budget details and spending so far under the program as per the latest information available, and we can have a discussion, hold a discussion post Sakshi's presentation. So over to you, Sakshi. All right. Uh, Good evening, everyone. And yeah, once again, thank you so much for tuning in for the session. So I have a PPT prepared. I will just share my screen, and once I'm done with the presentation, then we can, like, as Kezia suggested, we can like move for the discussions. So is my screen visible? Yes. Yes. Okay. Okay. How will I minimize this? Okay, so the topic of the webinar that we kept are highlights on the latest NCAP and 15th Finance Commission budgets and spends. And I think the topic itself is like very self-explanatory. And as Kezia gave an introduction, so why this session today? Why we are conducting this session today? So most of us who are in this session know that the NCAP has completed 5 years. So it was initiated in the year 2019, January 2019, and in January 2023 it completed 5 years, which was its first tenure. And later then it was extended for next 2 years by 2026. But over and all, we can see it has completed its like first 5 years, first tenure, and now we are in a better position to assess the performance of the policy and like what are the nitty-gritties of it. Also, NCAP is the flagship program of India when it comes to reducing air pollution and addressing air pollution, and with targeted budgets, steps in place, mechanism in place. So it was first of its kind of policy targeting the air pollution domain in the country. Now, before like I actually deep dive into the presentation, I just want to put it out ki this is like not a very expert opinion. I'm not providing expert opinion out there. It is just a consolidation of like what is the available information out there, and I have just consolidated it, and just it's a information and knowledge sharing session. And at the end of it, if we have some doubts and queries, we can discuss on it. And if we find ourselves in a situation where we don't have any answers, we will go back and try and like come back after once we have enough information on it. So yeah, so starting with it, so as I mentioned, NCAP completed 5 years. So initially its target was to reduce 20 to 30% reduction in particulate concentration by the year 2024, where 2017 particulate matter concentration was taken as the base levels. But recently that policy was revised, and now the targets have been revised to 40% reduction of PM10 concentration by the year 25-26. So now there are two changes. First, the timelines have been changed, and second, the targets have also been revised. So these are the like basic differences between NCAP 1 and NCAP 1. NCAP 2. Right now, when we look into the performance of the policy, so I have just, so there are like many pointers to it, what it has achieved, what it has not achieved. But I have just put forward the basic highlights of like what are the achievements of the policy that we can see clearly so far. So so
this information is basically taken from the Lok Sabha winter session that took place in December 2023. So this is the highlights that were presented into that session. So it was put forward that we all know that there are 131 non-attainment cities that are like marked under the NCAP program, and it was said that 90 out of the 131 cities have shown the improvement in particulate matter concentration. So that was one of the achievement. The other thing was ki 15 cities out of the 131 cities, 15 cities have already met the national ambient air quality standards in 22-23 for the PM10 concentration. The other thing is ki, so all the 131 cities were mandated to plan to make action plans to address the air pollution issues in the city, and all the 131 cities have their action plans in place. Later there was a concept of micro action plans also issued, but safe to say कि micro action plans का जो भी status है that is at different stages in different states and cities. बट बट जो मेजर एक सिटी एक्शन प्लान है, एक जो ब्रॉड सिटी एक्शन प्लान है, इट इज इन प्लेस इन ऑल द 131 cities. अनदर अचीवमेंट ऑफ एनकैप इज कि जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं जो इंडिया में, जो एक मॉनिटरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट व्हेन इट कम्स टू एयर पोल्यूशन. सो उसमें एक बहुत ज्यादा चेंज हमको देखने को मिला कि देर आर नाउ 1447 एम्बियंट monitoring stations in the country, which is a huge leap when the policy was initiated in 2019. And इनमें से जो 516 है वो हमारे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग स्टेशन है जिनको हम CAQMS बोलते हैं, एंड 931 आर द मैनुअल स्टेशंस. Sakshi, your screen froze. Just a second. Sakshi will join in just a few seconds.
Sorry, Sakshi is facing some technical difficulty. Her laptop crashed. She's joining from her phone. So I think it'll just take 20, 30 seconds for her to join. Till then we can wait. Meanwhile, I'll share the presentation here. Hi, hi. Can you all hear me now? Uh, can you guys hear me? Yes. Okay, Yes, I'm yes, so Sakshi. sorry. I'm so sorry. My Yes. some network issue. So, Kezia, can you just like move the slides and I will narrate from here. So you do the presentation. I was on the first slide, I think. Yeah. Okay. So yeah, so I was saying we were talking about the achievements that NCAP has like achieved so far. So 90 out of 131 cities showed improvement in pollution levels. 15 cities already met the targets that the national ambient air quality standards. All the 131 cities ने अपने action plans को like prepare करके at least they have the action plans in place. मॉनिटरिंग जो स्टेशंस हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए इन द लास्ट 5 years and the PGRS, it stands for the Public Grievance Redressal System and Emergency Response System, which is our GRAP. So that is in place in all the 131 cities as per the information that was provided in Lok Sabha in the winter session. Next slide, please. ओके सो मतलब इसमें इस प्रेजेंटेशन में सो आई विल ट्राई टू गिव अ नेशनल ओवरव्यू आल्सो कि जो एक ओवरऑल हमारा जो नेशनल ऑल अक्रॉस द इंडिया वेयर द पॉलिसी स्टैंड्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे हब मेंबर्स ऑडियंस में हमारे हैं सो आई विल ट्राई टू एड्रेस इट स्टेट वाइज आल्सो कि टारगेटिंग द स्पेसिफिक स्टेट्स जहाँ पे हम एक्टिवली वर्क कर रहे हैं एंड आल्सो द सिटीज वेयर वी आर वर्किंग इन सो एक जो अब एक नेशनल एक हम ओवरव्यू लें तो आउट ऑफ 131 सिटीज देयर आर 15 सिटीज जिनमें more than 40% reduction in PM10 concentration हमको देखने को मिला है. There are 11 cities where 30 to more than 30 to 40% reduction है in PM10 concentration. 23 cities में 20 to 30% से ज्यादा reduction है. 16 cities में 10 to 20% reduction in PM10 concentration. And there are 66 cities जिनका जो reduction जो उन्होंने achieve किया है which is less than 10%. So overall in 131 cities, this is the level of PM10 concentration reduction that we have seen in the year 22-23 as compared to 2017-18 के जो हमारा जो बेस लाइन जो ईयर लेते हैं हम उसके अकॉर्डिंग में ये परफॉर्मेंस रहा है in the last 5 years. Next slide please. नाउ अब हम स्पेसिफिक जिन स्टेट्स में जहाँ पे हम एक्टिवली वर्क कर रहे हैं और हम सिटीज को अगर देखें सो 5 स्टेट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली. सो झारखंड में सबसे पहले क्रोनोलॉजी झारखंड में 3 सिटीज धनबाद, जमशेदपुर, रांची. यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिडक्शन है धनबाद में है 35.56% का, फॉलोड बाय रांची 24.11% एंड जमशेदपुर 6.67%. सो ये परसेंटेज रिडक्शन है इन द लास्ट 5 years. बट यहाँ पे एक चीज देखने की कि स्टिल जो एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन है कि जब हम 22-23 में भी बोलते हैं कि 203 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब या 126 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब, इट इज स्टिल मच हायर देन द परमिसिबल जो हमारे नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो PM10 का हमारा है कि 60 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब हम एनुअल स्टैंडर्ड लेते हैं. सो उससे कहीं ज्यादा है. सो इम्प्रूवमेंट काफी है बट स्टिल द जो कंसंट्रेशन है इट इज मच हायर देन द परमिसिबल लिमिट्स.
महाराष्ट्र में मुंबई में 27.95 ऑलमोस्ट 28% हमको रिडक्शन दिखा है इन PM10। पुणे में 5.88%, नागपुर में 3%, जस्ट 3%, एंड औरंगाबाद एक ऐसा शहर है जहां पे 42% इंक्रीज हुआ है पार्टिकुलेट PM10 का जो कंसंट्रेशन है उसमें। सो इट वाज 75 माइक्रोग्राम्स इन 2017-18, इट जम्प टू 107 इन 22-23। पंजाब की बात करें तो अमृतसर में 36.51% का रिडक्शन है, खन्ना में 27.46, एंड लुधियाना में सिर्फ ऑलमोस्ट 3% का रिडक्शन है। बट जो एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ PM10 है इन 22-23 स्टिल मच हायर देन द परमिसिबल लिमिट्स। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में सबसे ज्यादा रिडक्शन है 34% का अप्रोक्सीमेटली, हावड़ा में 10% एंड दुर्गापुर में 7.33% का। दिल्ली में भी 13.28% का रिडक्शन है, बट as you can see जो absolute concentration है, average concentration PM10 का, it is 209, which is way more than the permissible limits. So this is the overall state and city wise scenario जहाँ पे हम लोग actively work कर रहे हैं. Next slide please. नाउ अब हमने एक ओवरऑल ओवरव्यू देखा कि पोल्यूशन जो कंसंट्रेशन है या जो PM10 का कंसंट्रेशन है उसका क्या सिनेरियो है इन द लास्ट 5 years अंडर एनकैप। बट अभी हम बजट पे आते हैं कि बजट व्हाट इज लाइक द बजट सिनेरियो लुक लाइक फॉर दिस पॉलिसी एंड प्रोग्राम, बिकॉज एनकैप का एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि एनकैप में क्योंकि डेजिग्नेटेड सेंट्रल फंड्स फॉर लाइक वर्किंग ऑन एयर पोल्यूशन वाज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर दिस पॉलिसी। सो जब हम फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें इसमें बाइफिकेशन है, बिकॉज जो सिटीज हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो ओवरऑल वी नो कि 131 सिटीज हैं, इसमें से 82 को हम NACs बोलते हैं विच आर कॉल्ड एज द नॉन अटेनमेंट सिटीज, एंड 49 जो है ये कहलाती है मिलियन प्लस सिटीज। तो 82 प्लस 49 कम्स टू 131। सो ओवरऑल 131 सिटीज हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, उनमें से 82 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं, 49 मिलियन प्लस सिटीज है। अब ये बाइफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इसके फाइनेंस जो बजट्स जो अलॉट होंगे उसमें इम्प्लीकेशंस है, एंड ऑल्सो जो टारगेट्स जो इन सिटीज को इन दो कैटेगरीज को प्रोवाइड किया गया है वो अलग अलग हैं। सो सबसे पहले बजट की फंडिंग की बात करें तो ये जो 82 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं ये इनको फंड करता है जो एनकैप का जो फंड है, जो एनकैप फंड है वो इन 82 नॉन अटेनमेंट सिटीज को फंड करता है। जबकि जो ये 49 मिलियन प्लस सिटीज है, एज द नेम इंडिकेट्स इट डेजिग्नेट्स द पॉपुलेशन। सो if the population is more than a million, it's called a million plus city. So in 49 cities को 15 finance commission funds के through funding मिलती है to act on the air pollution issue. So ये funding के pathways अलग हो जाते हैं in the two categories. Also इनके जो टारगेट्स हैं वो भी अलग अलग हैं। जो ये 82 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं इनको टारगेट है कि इनको 3 to 15%, लाइक एनीवेयर बिटवीन 3 to 15% एनुअल रिडक्शन शो करना है, दैट इज देयर टारगेट। and overall over the time it is like extrapolated कि 40% if these cities are able to reduce 3 to 15% pollution, 40% ओवरऑल जो टारगेट है पॉलिसी का दैट विल बी अचीव। बट ये जो 49 जो मिलियन प्लस सिटीज है इनको टारगेट है कि इनको 15% रिडक्शन शो करना है एनुअली। सो देयर इज नो रेंज, इट इज एब्सोल्युटली 15% रिडक्शन दे हैव टू शो इन PM10 concentration, or they and they have to show improvement in good air quality days. So good air quality days AQI से related है, the air quality index when it is less than 200 it is called a good air quality days. So over like all across the year इनको इस good air quality days के नंबर को increase करना है। So like जो targets हैं ये अलग है and जो funding pathways है वो अलग है। नाउ जो दूसरी चीज है एक नोट करने की कि जो इनकैप फंड्स हैं उनको हम बोलते हैं कि सप्लीमेंटल परफॉर्मेंस बेस्ड फंड्स। सो व्हाई इट इज कॉल्ड सप्लीमेंटल परफॉर्मेंस बेस्ड फंड? सो परफॉर्मेंस बेस्ड इज क्लियर बिकॉज इट इज बेस्ड कि अगर कोई सिटी जो कुछ there are certain matrix in which a performance of a city is like judged upon कि इनके 4-5 है कि एक्शन प्लान होना चाहिए, पॉल्यूटेड मैटर कंसंट्रेशन में डायरेक्ट रिडक्शन होना चाहिए, मॉनिटरिंग स्टेटस बढ़ना चाहिए, एंड ओवरऑल जो देयर शुड बी रिडक्शन इन पॉल्यूशन। सो ऐसे 3-4 मैट्रिक्स
हैं। सो जब ये मैट्रिक्स फुलफिल होंगे so तब उस सिटी का परफॉर्मेंस जो है वो कंफर्म होगा। सो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ईच ईयर दीज सिटीज गेट फंड्स, सो दैट्स व्हाई परफॉर्मेंस बेस्ड फंड्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सप्लीमेंटल फंड्स? सो सप्लीमेंटल फंड का मतलब है कि इनकैप जो एक्शन प्लान है, इनकैप सिर्फ इनकैप के जो फंड्स है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उन एक्शंस को फुलफिल करने के लिए। जो अदर सेंट्रल स्कीम्स हैं जो सेंट्रली रन है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन है, अमृत मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, सतत स्कीम है, सो ये जो दूसरी सेंट्रली रन स्कीम्स हैं ये भी इनपुट करेंगी ये जो एक्शन पॉइंट्स है उसको फुलफिल करने में। एंड जब कोई ऐसे एक्शन पॉइंट जो इन स्कीम्स के अंडर नहीं आते हैं उन एक्शन पॉइंट्स को फुलफिल करने के लिए इनकैप फंड्स का यूज होना है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ सप्लीमेंटल फंड. So that was an important thing about the NCAP funding structure. Next slide, please. Now, I just told ki what is the basic concept of the NCAP funds. Now let's talk about the quantification कि पिछले 5 साल में कितना funds release हुआ है किस तरीके से funds. So now we will talk about some numbers here कि कितना क्या funds हुआ है. So NCAP जो पॉलिसी है वो 2019 में शुरू हुई एंड 2026 तक के ये चलेगी. सो उसके लिए एक ओवरऑल जो फंड जो गवर्नमेंट ने अलॉट किया है दैट इज 19,711 already has been stopped. Okay, so these many funds have already been registered. जितना भी है उसमें से ये लास्ट ईयर तक के इतने फंड्स रिलीज हो चुके हैं. अगेन वी कम टू द बाइफिकेशन कि इनकैप फंड्स के अंडर 1292.5 करोड़ रिलीज हुए हैं, आउट ऑफ विच 480.92 करोड़ यूटिलाइज है कि जिन जिन सिटीज को भी इतना फंड्स है उसमें से 480.92 करोड़ यूटिलाइज हुए हैं. सो you can see कि there is a gap between क्या रिलीज हुआ है and क्या यूटिलाइज हुआ है. So there is a gap in between there. Now talking about the 15th Finance Commission funds, 9,650 करोड़ में से 8,357 करोड़ जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन के 15th फाइनेंस कमीशन से रिलीज हुए हैं टू द मिलियन प्लस सिटीज एंड उसमें से 5,835 करोड़ ही यूटिलाइज हुए हैं. सो ऑल्सो यू कैन सी कि इन दो फंड्स का जो अमाउंट है उसमें भी एक डिफरेंस है. जो इनकैप फंड्स हैं 15th फाइनेंस कमीशन फंड्स आर मच हायर देन एज कंपेयर टू द इनकैप फंड. सो दैट इज द होल क्वांटिफिकेशन ऑफ कि अभी तक के इनकैप के अंडर किस किस पाथवे से कितना फंड्स रिलीज हुआ है. Now, just this is an extra note कि अभी क्योंकि 2022 में एक recent circular release हुआ था from the central government कि ये जो भी funds release हो रहे हैं इसको कोई भी सिटी कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को खरीदने के लिए नहीं यूज कर सकते. जो CAQM जो मॉनिटरिंग जो कंपोनेंट है इन फंड्स का यूटिलाइजेशन वो मॉनिटरिंग सेटअप क्रिएट करने में नहीं यूज हो सकता. सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द फंड्स. सेकेंड चीज की वेरियस एनालिसिस केम आउट वंस एनकैप कंप्लीटेड 5 years और उसमें ये शो हुआ कि most of the cities are not able to utilize the funds that are being allotted to them. कि 131 में से जो 64 cities हैं they are not even able to utilize 50% of the funds that they have been allocated. कि जो भी उनको फंड आया है उसमें से 64 cities ने 50% भी फंड यूटिलाइजेशन नहीं किया है. So as I said कि there is a huge डिफरेंस बिटवीन क्या उनको सिटीज को फंडिंग के उसमें आ रहा है एंड वो कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं. सो देयर इज अ बिग गैप देयर. So that was about the quantification and numbers, to put the numbers on how the fund is flowing under the NCAP scheme. Next slide, please. So एक ये overall मैंने सिनेरियो बताया कि
ओवरऑल इंडिया में अंडर द इनकैप प्रोग्राम क्या फंडिंग स्टैटिस्टिक्स है. नाउ कमिंग टू स्टेट्स दैट वी आर वर्किंग इन. सो अगेन आई हैव मेड द बाइफिकेशन कि 15th फाइनेंस कमीशन फंड जो आए हैं मिलियन प्लस सिटीज को महाराष्ट्र में, एंड इनकैप फंड्स. नाउ ये फंड्स ओवरऑल मैंने बताया कि महाराष्ट्र में जितने भी लाइक सिटीज हैं अंडर द इनकैप प्रोग्राम, उनको कितने कितने फंड्स हैं, नॉट द स्पेसिफिक 3-4 सिटीज दैट वी आर वर्किंग इन. सो महाराष्ट्र में 15 फाइनेंस कमीशन के अंडर में 2252 करोड़ आए हैं, आउट ऑफ विच ओनली 748.48 करोड़ हैव बीन यूटिलाइज्ड. पंजाब 159 करोड़, झारखंड 273.44 करोड़ एंड ओनली 131.47 करोड़ हैव बीन यूटिलाइज्ड. वेस्ट बंगाल में 681.25 करोड़ आए हैं, आउट ऑफ विच 613.16 crores have been utilized. Coming to the INCAP funds के अंदर महाराष्ट्र में 164 crores आए थे, जिसमें से सिर्फ 59 crores, almost 60 crores have been utilized. पंजाब में इनकैप के थ्रू 75 almost 76 crores आए, 18 crores यूटिलाइज हुए. झारखंड में इनकैप के अंडर 6 crores आए, 5.47 has been utilized, and West Bengal में 57.97 crores under NCAP and only 24 crores have been utilized. So again, two streams के under states को कैसे कैसे fund मिला है, it gives a state wise scenario of the whole thing. Next slide, please. Now this table is very interesting. So I have given city wise scenario. Now there are like 4 columns which जो same ही like almost I'm trying to showcase the similar figures, but you can see the difference. So because यहाँ पे 2 sources of information use हुए हैं. फर्स्ट इज जो मैं लोकसभा के विंटर सेशन की बात कर रही थी कि जो पहले 2 कॉलम्स हैं ये डेटा वहां से लिया है, एंड मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पीआईबी, जिससे बहुत सारे पॉलिसीज के बारे में हमको पता चलता है. सो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो वहां से जो मैंने डेटा लिया है वो ये जो नेक्स्ट 2 कॉलम्स हैं उसके लिए. एंड ये डेटा बता रहा है कि दिसंबर 2023 तक के किस सिटी को कितना फंड आया है एंड यूटिलाइज हुआ है. बट आइडियली इन आइडियल सिनेरियो, no matter what the source of information is, the number should be absolute. If we are talking about कि हाँ same timelines की हम बात कर रहे हैं, so वो number same होना चाहिए. But here we can see a difference कि जो दोनों sources हैं उसमें information अलग अलग दी हुई है. जैसे कि हम सबसे पहले नागपुर की बात करें, so according to जो लोकसभा में जो data present हुआ था उसमें 132.6 crores have been allocated, has been released for Nagpur, जबकि पीआईबी का जो डेटा बोलता है वो बोल रहा है कि 142.05 crores have been released. So there is a difference of 10 crores in between the 2 sources. यूटिलाइजेशन में भी सेम है कि यूटिलाइजेशन में लोकसभा का डेटा बोल रहा है कि 17.71 crores have been utilized in Nagpur, जबकि पीआईबी का जो डेटा है वो बोल रहा है कि just 6.32 crores have been utilized. So again there is a huge gap between both the sources, जो भी डेटा दोनों सोर्सेज में पुट अपॉन किया गया है. औरंगाबाद में इट्स नॉट मच डिफरेंस, बट स्टिल देयर इज समथिंग दैट some difference we can see. Coming to Greater Mumbai, so again you can see almost a 10 crores difference between the released data की 929 and 931, and even more gap between जो utilization का जो data है कि according to Lok Sabha 595 crores have been utilized in Greater Mumbai, but PIB का data बोल रहा है कि 680 crores have been like utilized. So as we go like city by city, we can see कि there are discrepancies कि हर source से जो हमको data मिल रहा है वो अलग अलग है. पुणे same utilization figures are different, and these are like still कि आप बहुत एक like grave difference नहीं उतना है like if we just remove other cities, but there are examples of like cities in other states like Karnataka or somewhere where the gap in this data जो sources का data है that is very huge. कि अगर हम जैसे बैंगलोर की बात करें, so Bangalore ki I'm just I have not put it on the table just for the sake of giving the example कि जब बैंगलोर की बात करें तो
लोकसभा का डेटा बोलता है कि 535 करोड़ बैंगलोर को मिले थे, जिसमें से उन्होंने 305 करोड़ ऑलमोस्ट यूटिलाइज कर लिए हैं। जबकि जो डेटा, जो पीआईबी का जब डेटा आया तो वो कहता है कि बैंगलोर को 541 करोड़ मिले थे, जिसमें से सिर्फ 5.47 करोड़ उन्होंने यूटिलाइज किए हैं। सो ऑलमोस्ट 300 करोड़ का डिफरेंस है। सो लाइक दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस टेबल कि द सोर्सेस, सो ये जो सोर्स का जो एक कंफ्लिक्ट है कि विच सोर्स टू लाइक गो टू फॉर लाइक गेटिंग द इंफॉर्मेशन, अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग फिगर्स वी आर गेटिंग। इट कुड बी डिपेंडेंट ऑन द टाइमिंग्स की, क्योंकि ये अलग अलग थोड़े कुछ महीनों के डिफरेंस में ये डेटा रिलीज हो रहे हैं, और लाइक व्हाट इज बीइंग रिगार्डेड, सो देयर इज अ कंफ्यूजन देयर। बट ओवरऑल इट गिव्स अ सिनेरियो कि हम जिन सिटीज में काम कर रहे हैं एक्टिवली, वहां पे व्हाट डज द फंड एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन लुक्स लाइक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, so this image I have taken from an article. So एक analysis आया था climate trends का, जहाँ पे उन्होंने like analyze किया था कि is there some parallels between funding and pollution reduction, कि जो fund मिल रहे हैं, जो fund utilize हो रहे हैं, क्या उसका कोई एक डायरेक्ट कोरिलेशन है पॉल्यूशन रिडक्शन से, क्योंकि ज्यादा फंड मिल रहे हैं और ज्यादा फंड यूटिलाइज हो रहे हैं। सो क्या ये इंश्योर करता है कि पॉल्यूशन भी साइड बाय साइड उतना ही उसी प्रोपोर्शनैलिटी के साथ रिड्यूस होगा। सो एज वी कैन सी कि चेन्नई ने 100% फंड यूटिलाइज किए हैं अपने, उसको जो भी मिला है उसमें से 33.4% उन्होंने PM 2.5 में रिडक्शन देखा है। एज लाइक सेम गोज टू कोलकाता, 92% यूटिलाइज किया, 16.7% रिडक्शन मिला। बट नाउ व्हेन वी एंड लाइक जब हम लोअर यूटिलाइजेशन में जाते हैं, सो पुणे की 26% उन्होंने फंड यूटिलाइज किए, एंड उनका जो PM 2.5 का लाइक कंसंट्रेशन है दैट इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 10% लाइक दैट। सो लाइक इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट कि ज्यादा फंड यूटिलाइजेशन अगर होगा तो 100% श्योर कि पोल्यूशन रिडक्शन होगा, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सेवरल अदर फैक्टर्स। बट एक डायरेक्ट कंपैरिजन की बात करें, सो नागपुर एंड लेट्स से हैदराबाद एंड जयपुर के, हैदराबाद ने भी अप्रोक्सीमेटली 80% फंड यूटिलाइज किए हैं। इट विटनेस एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 7% इन PM 2.5 concentration, while Jaipur utilized 80% of the funds, but the PM 2.5 concentration deteriorated by 13%. So that's why key fund utilization is like not always proportional to the pollution changes that we are witnessing. It is more about कि जो funds हैं वो किन solutions के लिए use कर रहे हैं हम, कि just applying the funds and just doing something will not ensure pollution reduction. जो really effective solutions है, if the funds are being utilized for those purposes, then only we can like actually see some impact on ground, right? And this is again ये एक further conversation का and further research का एक है कि वो solutions की अभी 5 साल हुए हैं NCAP को, so now maybe it's time for assessment कि क्या क्या solutions in place किए गए हैं, उनसे क्या क्या like कौन सा solution कितना effective है, कि over the time कि हाँ कि funds should be utilized in those solutions and not the ones जिनसे हमको ज्यादा changes नहीं दिखाई दे। So effectivity of the solutions could be the topic of like future research and discussion. Again, but जो ये second image है, it shows कि जो 10 most polluted like जो most polluted cities हैं in India across, वहाँ पे एक pattern हमको दिखाई देता है कि वहाँ पे जो funds है वो under use तो हो ही रहे हैं। कि हम पटना की बात कर लें, या हम नोएडा की बात कर लें, या हम फरीदाबाद की बात कर लें, तो वहां पर क्लियरली एक चीज है कि उन्होंने क्योंकि फंड्स यूटिलाइज नहीं किए, मतलब सॉल्यूशंस इन प्लेस नहीं है, एंड दैट्स व्हाई these cities are not having any respite from the pollutant concentration within the city. That next slide please. ओके, सो एक ये जो ओवरऑल एक जो सिनेरियो है दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि इनकैप में क्या हुआ है अभी तक,
क्या कितना pollution reduction, what is the funding, like looking at all the sources. So what challenges I could see, or maybe like all of us could see कि इसमें क्या क्या challenges हमको इस overall 5 years में या इस डेटा के थ्रू दिखाई देते हैं. सो सबसे सबसे पहला चैलेंज जो है कि बिकॉज इनकैप में फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनकैप funding and this financial and these budgets are in itself very complicated topics कि ये finances and everything ये बहुत complex होते हैं. And when a program is like running on a national level, ये बहुत complicated है for people like us to understand, right? And NCAP में because दो channels of funding है कि there are NCAP funds and there are 15 finance commission funds, तो एक slightly even more complicated it becomes to understand and track also कि उस चीज को ट्रैक करने के लिए कि मेरे सिटी में कितना फंड फ्लो हो रहा है या मेरे स्टेट में कितना फंड फ्लो हो रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर गेटिंग डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड ट्रैक. ऑल्सो इन फंड्स का नेचर बहुत अलग अलग है कि कितना अमाउंट आ रहा है, किस समय पे आ रहा है, ये कैसे लाइक the concept of interest and all, ये दोनों फंड्स के लिए अलग अलग हैं. So it's challenging for us to understand and track जो ये इसके फाइनेंशियल निटिग्रिटीज हैं ऑफ दिस प्रोग्राम. सो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज. सेकंड, हमको डेटा अगर मिल भी जाता है कि जो एक बजटरी जो डेटा है वो हमको मिल भी जाता है, सो बिकॉज देर इज नो वन स्टॉप सोर्स फॉर दिस थिंग कि राइट नाउ व्हाट फ्रॉम द सोर्सेज दैट आई टुक इन्फॉर्मेशन इज, एक तो प्राना पोर्टल, दूसरा आई सेट की लोकसभा का जो विंटर सेशन था उसमें से मैंने डेटा लिया, एंड तीसरा जो पीआईबी के जो रिलीजेस आते हैं उससे हमको डेटा मिलता है. सो देर आर मल्टीपल स्टॉप्स फॉर द डेटा दैट वी आर लुकिंग फॉर, एंड इन सब के फिगर्स जो हैं वो डिफर करते हैं कि इसका इस सोर्स का डेटा इस सोर्स से मैच नहीं कर रहा, देयर इज अ ह्यूज गैप. सो ये जो एक डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन जो इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द आउटलेट्स, ये एक अलग चैलेंज है कि हम किस डेटा को हम ट्रस्ट करें. दैट वी डोंट नो येट कि which what is the thing that we should go for, right? Third, डेटा की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट प्राना पोर्टल. सो जब इनकैप आया था 2019 में, तो उस समय जो प्राना पोर्टल था दैट वाज लाइक टोल्ड टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द इनकैप रिलेटेड इन्फो कि इस वेबसाइट पे इनकैप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन अपडेट होगी टाइमली. प्राना ओवर द इयर्स इट हैज डेवलप्ड ऑफ कोर्स, बट जो विजन जो बताया था कि भाई एकदम रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर, इट इज नॉट देयर येट. प्राना पोर्टल में अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो बुलेटेड इंफॉर्मेशन मे बी वी कैन गेट कि कितना फंड्स एंड कितना पोल्यूशन, दे शो ग्राफ्स एंड एवरीथिंग, बट जो एक सिटी, बिकॉज इनकैप इज अ वेरी इज एस्पायर टू बी अ माइक्रो लेवल पॉलिसी की सिटी बाय सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट इट इज सपोज टू फंक्शन. सो जो स्पेसिफिक्स हैं कि ओके सो बट इस सिटी में कहाँ पे वो डेटा यूज किया या इस सिटी के स्पेसिफिक क्या एक्टिविटीज हो रही है, still we are not able to get that information from Prana, and also the information is not updated. जो real time जो information update जैसा होना चाहिए Prana में फिर भी एक lag है, so it is not there yet. The Prana portal, it has a long way to go. Now, talking about the budgets, as we have seen from the PPT, कि there is massive underutilization of funds under the NCAP program. कि 62 cities 50% funds भी use नहीं कर पाए हैं अपने. So like to actually like see a reduction and actually work for bettering the air quality, at least जो भी हमारे पास solutions हैं या जो है action should be taken, and at least जो भी given funds है that should be utilized properly. But still जो utilization of fund है that has been a challenge in this program कि funds utilize नहीं हो पा रहे हैं in for the specific solutions. And also the last thing that I have mentioned is कि it's very difficult to decipher कि what solutions the funds are being invested in and what solutions are especially effective. कि जो भी funds utilize हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन, दैट सिटी वाइज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमको नहीं पता है कि अगर नागपुर में इतना फंड आया है तो एग्जैक्टली वेयर इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड, और अगर ठीक है वो यूटिलाइज हो भी गए, हमको पता भी चल गया, तो कौन कौन से ऐसे मेजर सॉल्यूशंस हैं जो एक्चुअली नागपुर में पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं, कि क्या रोड बनाने से नागपुर का पोल्यूशन कम हुआ है या स्प्रिंकलर्स लगाने से पोल्यूशन का. सो ये जो एक रिसर्च या साइंटिफिक जो एक अंडरस्टैंडिंग है दैट इज स्टिल नॉट क्लियर कि व्हाट सॉल्यूशंस आर
actually leading to the impact that we see in so far that we see कि ऐसे कौन से solutions हैं जो actually effective हैं, वो हमको अभी तक नहीं पता है. So like as the policy continues, maybe that is something that needs more research and discussion on. Next slide. So next slide, I have not put anything because it is for us to like more discuss and brainstorm on. So how can the hubs help, and what, and like citizens and the hubs, and what is their role in this whole thing? So like couple of things that I could like think from the top of my head is कि सबसे पहली बात कि एक सब जो data है, data is a very big part of like every policy, and especially NCAP में data का एक बहुत बड़ा importance है, right? So at least as hubs and as citizens who are working on air pollution, we can like from our whatever capacity, we can try to get the data to like the two pathways that I can think about is ki one, we are, if we are in good working rapport with our urban local bodies, so we try to like get the data from them, right? कि उनसे बात करके कि हमारे सिटी में कैसा क्या फंड्स हुए हैं, कहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, like that. So that is one way कि we directly, if we have that kind of like relation with our urban local body, we can get from there. The other more maybe approachable thing to do is RTIs. Again, RTI is a like long way कि it takes time to get a response from RTI, but RTI is also a very like feasible and like reachable thing to do from like where we are at. कि आप RTIs file करें, like continuously you keep filing RTIs and try to get the information that we want via those RTIs. And if at all we have some success, so share amongst like the other maybe cities from the same states ki yes, we filed this RTI and this led to some positive response, and maybe we can do a knowledge sharing thing ki yes, this kind of questions, yeah, this thing works for that. So that is our role ki from where we can like input on getting the data. Second thing जो एक ये over the top हमारे experience से कि like talking with the experts and our experience that has been कि when we approach a municipality for like asking for data, it is like good to always have something to tell कि how we are going to utilize that data, because that works with the government bodies कि we are asking for this data कि हम आपसे ये data मांग रहे हैं, and हम इस डेटा को इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, राइट? सो जब आपके पास एक पॉजिटिव प्लान होता है तो जनरली द म्यूनिसिपैलिटीज आर मोर रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स दैट रादर देन एक कोई एब्स्ट्रैक्ट की डेटा है, बिकॉज दे आर वेरी स्केप्टिकल ऑफ कि if they give the data, how that data is going to be utilized. So if there is some plan that we can tell, it is a bit more favorable when it comes to dealing with the municipality. And जो एक third एक बहुत generic thing है कि it city by city differ करती कि like try to help the urban local body, because it is the like most basic mechanism for this whole program, the urban local bodies की to implement the action plans in place. कि अगर उन्होंने कुछ एक annual अपने target set किए हुए हैं कि इस साल this that, so we as citizens and hubs can maybe try to talk to them ki how can we help them to implement those, and is there any way we can help them to implement. So a positive and supportive approach, if it is there, so that goes a long way to build a relationship and like let the policy function smoothly in most of the cities. Because top down jo ek central policy है, top down is like important for creating a whole massive scale change, but that bottom up key from the citizens and hubs, without that bottom up thing, no policy or program can work, right? So those are the like things that I could think from the top of my head, but it is like again open to discussion if somebody has like any other idea on how can we go about it. Yeah, so I am done. That is all from my side regarding the presentation. Sakshi, Sharmila mentioned that which pollutant is being tracked. Okay.
Right. No, so yeah, so rightly pointed कि जो उन्होंने जो मैंने images use किए उसमें PM 2.5 का they have done, but in NCAP 2.0 PM 10 is the major pollutant that is being tracked. So the analysis came out that was regarding the PM 2.5 thing, but currently NCAP में सिर्फ PM 10 they are like putting focus on. Rupesh has a question, Sakshi, that if I want to dig in more for data of my city, Aurangabad, what are the sources? So, what kind of data that would be like from that sources will differ. Okay, what kind of data you're looking for? So, if there is like AQ data, I would say CPCB. If there are monitors there in Aurangabad, so the CPCB ka portal keeps a track of the air pollution concentration ka data. Otherwise, we get this generic. If we are talking about the budget, so we get the overall number for a city. Ki Aurangabad mein this much budget and this much funds have flowed, like that. So for that again, funds. Okay, so funds ka again. So there I said ki the two datas ki first PIB ke through we get spending and utilization. It keeps coming from time to time जहाँ पे government update करते हैं. So these news pieces or these articles जो government वो करते हैं वो that is I think the way to go regarding the budget, because prana में होता है update, but prana में it takes time to like get updated जो एक overall figure if we are saying. Okay, Q&A section. Yeah, I see there are a lot of questions, but some of them have been answered, and uh, For the funds, I don't think, Rupesh, there is a designated portal where like funds are like actively tracked in details, because it is all dependent on what is being released from the government side, that information, and then that feeds into different website like the NCAP tracker or the even the Prana things. So it is dependent on again the government notices that come from time to time. Also like from this experience I felt कि जो भी हमारे जो budget जो sessions होते हैं, जो parliamentary sessions होते हैं, those conversations are also important to track, because now like there are more questions and answers on the again this air pollution and overall environment related policies. So there are more Q&A that is being done. So maybe to keep a track of those sessions also provides some more information. okay, Soma had a question, but I think Natasha responded. Is there any list of 64 cities who are not even able to utilize the 50% of funds? I don't think they have given the distribute like city wise distribution of these 64 cities. The number came, but we can dig deeper into that. Maybe somewhere it is, but right now I don't have. Okay, so I just have like an overall in the room question ki how, because I talked about RTIs ki RTIs are also a way to go. So I just want to like get an idea ki how many of us in this like meeting have filed RTIs ever, like filed RTIs. If they can like just raise hands to just get an overview कि हम में से कितनों ने RTI. Okay, just if they can raise their hands. We have 6 people. Okay, so there are a lot of us. There are considerable numbers who have filed RTIs, but also some people who have like not. So yeah, so maybe like as a follow-up thing, maybe like I think it is helpful
if we can also conduct some follow-up session on this RTI filing thing, just a basic session on how do we file RTIs, and because there are technicalities onto it, because it's a government, we are asking the government, so there are some ways to keep, oh, this is the way to go, this does not work like that. So maybe I think a follow-up session like that on the RTI thing would be helpful for like most of us in the room. Yeah. Right. Yeah. So okay. Yeah. So I see Rupesh saying ki, if other people also feel, so they can also put it on the chat box ki, if they are like, if they feel ki session like that would be helpful. As Kankana is mentioning ki there is certain way to, like, when we are asking questions from the government, so it's also a skill, I feel that. Okay. Yeah. All right. So yeah, maybe a follow-up session on how to file RTIs when talking about that will be helpful. Okay. Okay. Over to you, Kezia. Yeah. So, yeah, definitely, I think it'll be useful for us to do a follow-up session on this. And I would just like to thank Sakshi for her insightful contribution to the webinar. A big thank you to all the attendees for their participation. Also, I would like to extend my gratitude to the organizers, technical support team, and all contributors behind the scene for their efforts in making the webinar a success. And we will share the notes and recording with you soon. And thank you so much for joining us today. Thank you, everyone.